Hello student, welcome to the Dhronas online classes. So today we discussing our medieval Indian history. Okay, तो ये जो पार्ट है ना अभी से ये जो medieval Indian history है तो या अगर हम लोग बोल सकते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है तो ये सीरीज सबसे ऐसे ही चालू होगा तो हम लोग एकदम फर्स्ट से चालू करेंगे. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फास्ट from the attack of the Mahmud Ghazni or the invasion of the Muslim ruler till the 1757, the Battle of the Palasi. Okay, so first of all, we started from the to our today's this our today's class is based on the invasion of the Muslim rulers or the leaders. Why we call leaders? Because they are the somewhat the leaders, they are the religious leaders or the leaders of the some regional territories. Okay, for that reason I use the term leaders. Okay, and some are the traders. We also use the term traders because the Muslims are entered India at first as the traders. Okay, so till the Mahmud of Ghazni, so we I started the date from the 1636 AD to the 1027 AD. So why I choose the 1636? All you have, I think, have a question, J, why the ma'am started from the 1636? So actual the first Muslim invention, the first Muslim invention. Okay, ठीक है. तो फास्ट जो मुस्लिम अटैक हुआ था वो इन्वेंशन हुआ था वो 636 को हुआ था. ठीक है, तो ये मतलब जैसे एक जो ट्रेडर्स थे जो अरबियन ट्रेडर्स थे जो व्यापारी थे, हाँ इनको बोलते हैं हम व्यापारी. तो अरबियन जो व्यापारी है जो अरबियन ट्रेडर्स थे वो कैसे आए थे? वो एट फर्स्ट बिजनेस करने के लिए आए थे. कहाँ उतरे थे? मालावर जो एरिया है, मालावर जो तट है जिसको हम लोग मालावर तट बोलते हैं वहां पर आए थे. ठीक है, तो उस टाइम पे वो लोग वहां पर बिजनेस करते थे तो इस पर्पस में वो लोग आए थे. तो 1636 को सबसे फर्स्ट जो अरबियन अटैक हुआ था अरबियन ट्रेडर्स का वो 1636 को हुआ था. तो इसलिए मैंने ये डिश चूज किया 636 एडी. और उससे लेके मतलब फ्रॉम दैट 636 टिल द 1027. Okay, so next we discussing the how the historian divided the history of the any country. So as we see, so and like the other countries, the the period of the Indian history also divided into the three parts. What are they? They are the ancient, medieval, and the modern. So the famous scholar, famous who? The famous scholar James Mill. Okay, I think you know about the James Mill. Okay, so James Mill divided the Indian history into the three periods. Okay, what are they? Ancient, medieval, and the modern. So this is a very important question for you. So the which British scholar divided the Indian history into the three parts? So note down these ones. The name the scholar, that is the James Mill. Next one, so how they categorize the period. So this is very clear. For this is a very clear thing that the each ages has its own character. Okay, so what is the character? What are the characters? So after seeing these characters, the scholars can be categorized the ages. So for examples, when we talk about the feudalism, okay, जब हम लोग फ्यूडलिज्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, फ्यूडलिज्म, ठीक है, तो फ्यूडलिज्म उसका जो कैरेक्टर है वो मेडिएवल एज का सिर्फ हमारे इंडिया का नहीं, नॉट ओनली इन आवर इंडिया बट इन वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो फ्यूडलिज्म जो है तो उनका मेन जो कैरेक्टर है मेडिएवल एज का वो फ्यूडलिज्म है. तो आई थिंक आप लोगों को सबको पता है जो फ्यूडलिज्म क्या है. तो फ्यूडलिज्म है एक लॉर्ड लॉर्ड सॉरी सो लॉर्ड किसके अंडर होता है? लॉर्ड लॉर्ड मीन्स लैंडलॉर्ड. ओके, लैंडलॉर्ड. So this landlord are organized under the king or the regional king. Okay, centralized king or the regional king. Okay, or a landlord. Okay, so
और द ग्रेट और द लैंडलॉर्ड्स। ओके, तो वो लोग क्या करते थे, तो ये जो बड़े बड़े किंग के अंडर में रहते थे बा जो लॉर्ड के अंदर में रहते थे, सुप्रीम लॉर्ड भी बोलते थे वो लोग अपने जो लॉर्ड लैंडलॉर्ड अपने लॉर्ड लॉर्ड लोगों को, तो उनके अंडर में रहते थे। तो जो किंग थे, जो रीजनल पावर्स थे, वो क्या करते थे, अपने जो टेरिटरी है they divided into the small parts, okay, and gave them to the these lords, okay, and they maintains the lands and the previous they accumulated the revenue, okay, and they also maintained an army, okay. So, and what is the main character or the main element of the modern age? How can we identify that this period is the modern age, belong to the modern age? As when we see the progress in the science and the economic growth, okay, the science, the progress, science and the economy, okay, had a vital relations, very important relations they have. Okay, so when we see there is a progress in the science, the economic, we simultaneously we saw the economic growth, okay, because that's if the science because the when we see the progress in the science, we see there is a technological advancement, okay, and this kind of the technological advancements is used in the several industries, okay. So by this way we can see the economic growth. So so for that the progress in the science and economic growth are the main element of the modern age. So in India, तो इंडिया में जो मेडिएवल पीरियड है ना, कब से स्टार्ट हुआ देखो, प्रिवेल्ड वन 1200 टू 1757, ठीक है। तो पहले जो था मैंने बोला था 636, तो 636 से 1200 तक जो पीरियड है, फ्रॉम द 636 टू द 1200 जो पीरियड है, इस टाइम जो मेन मोटिव्स थे, जो रूलर्स बोलो, मुस्लिम रूलर्स और इन्वेडर्स के जो मोटिव थे, ओनली द प्लंडरिंग एंड द लूटिंग्स, and due to the with by the help of the plundering and looting they accumulated the wealth and used the wealth in their use this wealth, they carry the wealth, okay, and they never want to establish a centralized administrations in India, okay. But after the 1200 we see that the Muslim rulers wanted to establish a centralized administrations, okay. For that reasons we officially say that the medieval period started from the 1200 to the 1757, okay. सो नीचे देखो मैंने मार्क कर दिया है, बट जो मुस्लिम सोल्जर्स तो थे उन लोग ने स्टार्ट किया है 1636 एडी, ठीक है। किसके पीरियड में हुआ है, देखो ये जो फर्स्ट अटैक हुआ था अरेबियन सोल्जर्स, अरेबियन ट्रेडर्स का, किसके अंडर में हुआ था, खलीफा उमर, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है हु इज द खलीफा, द हेड ऑफ मुस्लिम्स, ओके, और द रिलीजियस गुरु, ओके, ऑफ ऑल मुस्लिम्स, ओके। तो ये खलीफा जो है ना, इनका भी दो तीन डायनेस्टीज है। तो ये जो फर्स्ट जो जो वो इन्वेंशन हुआ था, ये फर्स्ट जो अटैक हुआ था, तो ये किसके कौन से खलीफा के पीरियड में होता, खलीफा उमर, ठीक है। और अरब ट्रेडर्स ने कहाँ अटैक किया था, देखो थाने ऑफ बॉम्बे, दे अटैक्ड ऑन द थाने ऑफ बॉम्बे, ओके। द बॉम्बे इज नाउडेज वी नोन एज द मुंबई, ओके ना। So after that 1730 17 sorry after that 1712 CE, Arabs invaded India from the northwest regions. Okay, you all here know the where is the northwest region is located in the India. So this is the this way is the very much importance for the Indian history. Why I say this, because by this path, okay, all invaders, all foreign invaders come to India, okay, and so like the others, Arab are also came to India by this path, and this is the northwest region of the Sindh, okay, and under the Mir Kashim. So, and the Mir Kashim was the general of the Umayyad dynasty. ठीक है से Umayyad Caliphate. Okay. So King Dahir, whom he defeated the Dahir. Okay, the King Dahir,
And from where we know about this invention or the story, or we know the story of the King Dahir from the Chachnama. Okay, the Chachnama is a book, very famous book, but who is the actual author of the Chachnama, the historian cannot recognize till date. So the first copy of this book is written in Arabian language. Okay, in Arabian language, and the second copy had been translating in the Persian language by whom? By Kufi. Okay, so note down these lines. That's the from which book we know about the King Dahir or the first attack of Mir Kashim from the book Chachnama. So here I think all you have a question. So why the book name is Chachnama? Because the Chach, sorry, the Chach is father of Dahir. Father of Dahir. For this reason, the book's name is Chachnama. So the first copy is written in Arabian language and the second is in the Persian translating. The second copy had been translating in Persian language by the Kufi. Next. So, after defeating Dahir, the Mir Kashim occupied some important places of his territory. Name the places, that is the Nirum, Shehban, and the Sisams. That places are this name of the name of the places has very much importance. You have the several type of the questions from these lines, because now as we know that the advanced questions are given by the now the exam the government questions, now the competitive exams have become very tough and the question is very advanced, so we can read the each and every details. Okay, so he was also own the capital. Which the capital, the name the capital of the Dahir. So what is the name of the capital of the Dahir? That is the Rawar. Okay, you write Rawar or Rawar, what you want. ओके, सो इसको हम रावण भी कह सकते हैं, रावण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या किया, जब दाहिर को हारते देखकर उसके वाइफ ने क्या किया, ठीक है, क्या किया, परफॉर्म्ड जौहर, ठीक है। तो ये इज द मेडिएवल टर्म जौहर। तो जौहर आई थिंक आप लोग को सभी को पता है जौहर क्या है ना। तो जौहर उसको हम लोग बोलेंगे। तो इस टाइम पे जब से ये फॉरेन ट्रेडर्स लोग या फॉरेन इन्वेंटर्स लोग इंडिया में आने लगे, तो जैसे दाहिर की वाइफ ने जो किया था, तो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए वो लोग, ऐसा है ना, जे बाहर से आए हैं ये इन्वेंटर्स, इनका बिहेवियर कैसा होगा टुवर्ड्स द वुमेन्स ऑफ द टुवर्ड्स द इंडियन वुमेन्स। तो ये लोग को लगता था जे आफ्टर जब उनके हस्बैंड का हो गया, उनका हस्बैंड का डेथ हो गया, उनके जो सोल्जर्स थे, जो अदर्स जो औरतें थी जिनके हस्बैंड एज ए सोल्जर काम करते थे, ठीक है ना, ऐसे सोल्जर्स, वो ऐसे भी बहुत पीजन्स भी थे उस टाइम पे। पीजन्स और अदर पीपल्स आर एंगेज इन द अदर ऑक्यूपेशंस आल्सो कम टू फॉट। सो वो लोग का जब डेथ हो गया, तो उनके वाइफ को ऐसा लगा, उनके वाइफ जो थे उनको ऐसा लगता था कि अब शायद उनका भी जो मतलब ये उनका भी शायद अब दुनिया में कुछ वास्ता नहीं वास्ता, मतलब उनका भी अभी ये जो बाहर से आए हैं उनको भी शायद इतना इज्जत दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, उनको रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे। तो उनके जब हस्बैंड का डेथ हो गया, तो उन्होंने भी अपने आप को सेल्फ बर्न किया, ठीक है। तो सेल्फ बर्न किया सब कोई ने। आग में क्या होता था जौहर में, जे सब कोई क्या करते थे, पहले अपने आप को हल्दी से कवर्ट कर लेते थे, है ना, कवर्ट करके फिर एक बड़ा सा, जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं, बड़ा सा यज्ञ का कुंड जलाते थे और उसमें वो कूद जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग जौहर परफॉर्म करते थे, क्योंकि फॉर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए वो लोग ये करते थे, ठीक है। तो और आफ्टर द डेथ ऑफ द दाहिर, हिज सन जय सिंह एडॉप्टेड इस्लाम, क्योंकि उस टाइम पे जो खलीफा थे उन्होंने ये बोला था कि ये जो दाहिर का जो एरिया है ना, दाहिर का जो एरिया है, जो सिंध का जो एरिया है, इसमें वो ही शासन कर सकेगा जो मुस्लिम होगा, ठीक है। तो इसलिए जय सिंह ने
इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखो, इसके बाद मीर कासिम ने क्या किया, देन आफ्टर दैट मीर कासिम वेंट टू द कश्मीर। ओके, ही वेंट टू द कश्मीर है, he went to the Kashmir, but the king ललितादित्य defeated him। ठीक है, तो ललितादित्य फेमस किंग थे कश्मीर के, फेमस किंग ऑफ कश्मीर। ठीक है ना, तो फेमस किंग थे कश्मीर के, तो उन्होंने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। सो अभी देखो, अब जब भी हम लोग इस तरह का इन्वेंशन होता है, कोई भी अटैक होता है जिसका कोई भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रहता है, तो उसके बारे में हिस्टोरियन लोग अपना अपना जो ओपिनियन है वो देते हैं। तो ये जो अरेबियन इन्वेंशन है, इसको लेके जो कर्नल टॉड है, उन्होंने वुजले हेग, स्टेनले लेनपुल, सब कोई ने अपना ओपिनियन जाहिर किया है जे ये जो अरेबियन इन्वेंशन है इसका क्या इंपॉर्टेंस है ऑन द इंडियन हिस्ट्री। सो एट फर्स्ट द कर्नल टॉड, सो कर्नल टॉड का जो बुक है, इनका जो बुक है उसका नाम क्या है, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, एनल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें इन्होंने राजपूतों के बारे में ही ज्यादातर जिक्र किया है ना, जिक्र उन्होंने राजपूतों के बारे में किया। तो उन्होंने दिखाया जी अरबियन इन्वेंशन है इंडियन हिस्ट्री का बहुत बड़ा एक, मतलब क्या बोले, बहुत बड़ा इंसिडेंट है, उन्होंने बहुत बड़ा चढ़ाकर इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, लेकिन आप अगर बुजले हेग का देखे या स्टैनली लेनपुल का बात देखे, तो उन्होंने बोला है जी इस तरह का जो इन्वेंशन है इंडिया में आगे भी होते रहे। आप लोग अगर एंशियंट हिस्ट्री में जाओगे तभी भी देखोगे जे ये जो शक पल्लव है ना, ग्रीस, ये लोग भी इसी पद से इंडिया में आए थे। तो इस तरह के इंसिडेंट्स पहले भी इंडिया में हो चुका था, तो इसका कुछ खास इतना इफेक्ट नहीं है। सो तो जब अमीर कासिम ने देखा जो कश्मीर पे उसका कुछ नहीं हुआ, तो वो कहाँ गया, वो गया হচ্ছে, उसको सीन्स से बाहर जाना था। ठीक है, लेकिन जब भी वो सीन्स के बाहर राजपूतना के उधर जाने चाह रहा था, मतलब राजपूता के उधर अपना टेरिटरी एक्सपेंड करने जा रहा था, तो हु रेसिस्ट देम, हिम सॉरी हु रेसिस्ट हिम, द गुर्जर पतिहार, the famous Gurjar Patihar kings, okay, and the Chalukyas of Badami. There is a several branch of the Chalukya kingdoms, okay. So one of them is the famous of Chalukyas of Badami, okay. So the both of them make both of them make a strong resistance or build a strong resistance against the Mir Kashim. And after that, the Mir Kashim died on the 1715s. So here is also a very conflict among the historians on the death of the Mir Kashims, because according to the someones that the Mir Kashims received a death penalty from the Khalifa, okay, but other was says that the Khalifa's brother, the Khalifa Wadis brothers, is a is not have did not have a very good relations with the Mir Kashims. Okay, the Suleiman did not have a good relations with the Mir Kashims, and he provoked the Khalifa to give him a death penalty. Okay, and after the Mir Kashims, who is the new governors of the Arab territory? That is the governor Zunaid, and after that governor Habib. Okay. So the after the Arabian inventions, the Turks. So we know the terms very well, Turks. Okay. So the Turks are starting their inventions. Okay. So actually, by the as we know, the by the end of the 9th century, okay, 9th century, the Abbasid dynasty was declined. So Abbasid dynasty is also a dynasty of the Khalifa. Okay, so as we know, the Khalifa has a several dynasty. Among them is famous the Khalifa dynasty. Among them as very much important, first of all the Umayyad, and second is the Abbasid.
ओके, अब्बासिद और उमायद। तो अब्बासिद डायनेस्टी का जो डिक्लाइन है वो स्टार्ट हुआ, और तुर्क्स हैड एंटर्ड द अब्बासिड डायनेस्टी। जैसे आप लोग देख रहे हैं जी, तुर्क कैसे गए थे, अब्बासिद डायनेस्टी में कैसे एंटर हुए थे, एज ए पैलेस गार्ड। ठीक है ना, पैलेस गार्ड और मर्सनरी सोल्जर्स के रूप से वो लोग गए थे, लेकिन बट soon they emerge as a kingmakers. So make under these lines they assume they emerge as the kingmakers. Okay, so this is the very important. So the Turkish are entered the Abbasid dynasty as mere only as a palace guard or mercenary soldiers, and slowly they captured the kingdoms and established their power. And during the between the period of 9th to 10th century, the most of the Afghanistan was under the control of the Sumanids. Okay, Sumanid dynasty or the Sumanist power. Okay, so among the Sumanist governors, the Sumanids also have the several Turkish slaves. Among them, the famous one was the Alaptagin, and the Alaptagin was the governor of which area of the Balak, and Balak is under the Afghanistan. So he also wanted to start an independent dynasty, okay, apart the Sumanids. So, and what is his capital? His capital is the famous Ghazni. Okay, so the Ghazni is the capital city of them. Okay, for that reason, perhaps for that reasons, the after the Mahmud he write the Ghazni, Mahmud Ghazni. Okay, so Alaptigin was succeeded. Whom he succeeded? The Alaptigin succeeded by his slave and son-in-law. Okay, whom? This is the Sovuktugin. Okay, so note down the time period of the Sovuktugin, that is the 1977 to the 998 CE. Okay, so this is the time period of the Sovuktugin, and he who established his own rule. Okay, Alaptigin wanted to establish his own rule, but but Sovuktugin finally established his own rule in Ghazni and the period in the time of the 1977. So you chronologically you learn the name of the king chronologically. After the Alaptigin, then the Sabuktigin, then the Mahmud of Ghazni. Okay, एंड अभी क्या हो रहा है एग्जाम में, क्या होता है ऐसा क्रोनोलॉजिकली आपको दे देते हैं जो आफ्टर इसके बाद कौन आया है, इसके बाद कौन आया है इस डायनेस्टी में। जैसे अलप्तगिन के बाद आपको दे दिया जाएगा मामूद गजनी, फिर सबुक्तगिन, ठीक है ना, नहीं तो सबुक्तगिन अलप्तगिन मामूद अब गजनी। ठीक है, तो फिर आपको वहां से ए बी सी और बी सी डी ऐसे करके ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोगों को चूज करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप लोग हिस्ट्री पढ़े तो हमेशा यू make sure that you should read or understand the history in chronologically, okay, in chronological order. Also follow the chronological order. So after that he defeated, and when we come to India, and he defeated whom? The Hindu Shahi ruler Jayapala. Okay, so Jayapala is a very much important king of the Hindu Shahi rulers, and occupied his territory of Kabul and Jalalabad, and he established whose dynasty? Yamini dynasty. Okay, whose dynasty? That is the Yamini dynasty. ठीक আছে, ठीक है, यामिनी डायनेस्टी, दैट इज द यामिनी डायनेस्टी। ठीक है, यामिनी डायनेस्टी। तो मामूद, अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आए जे मामूद गजनी, ठीक है, मामूद ऑफ गजनी कौन से डायनेस्टी ही बिलोंग, हुम व्हिच डायनेस्टी, तो योर आंसर इज द यामिनी डायनेस्टी। ओके, he belonged to the Yamini dynasty. So after Sabuktigins, we read about the one of the famous character of the Indian history, that is the Mahmud. Okay, Mahmud of Ghazni. So he ascended the throne in the Sirka. So where you write, see that C. What is the C means? C means the Sirka. Okay, Sirka means perhaps this time. Okay, so when we have a doubt and don't have a perfect date, don't have a perfect dates or the main date, okay, that we have our birth date, we have a particular month, okay, particular
month, particular year. Okay, but here I think the historian, I think not, but the all the historians have some doubts. For this they choose the 998 and give here a C. C for the circa. Circa means approximately he ascend the throne this year. Okay, तो सिर का मतलब ऐसे होता है, ऐसे होता है जे आपको पता नहीं है जे परफेक्ट कौन से दिन में हुआ था, ठीक है, डेट, द डे, डे का डेट पता नहीं होता है, तो ईयर पता रहता है हम लोगों को। ईयर में भी शायद आगे पीछे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है हिस्टोरियंस को, जैसे ठीक से पता नहीं चल पाता ड्यू सोर्सेस का कमी की वजह से, है ना, तो फिर ऐसे सिर का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो सिर का 998 में ही है। So he was associate the Persian Renaissance writer फिरदौसी। So महमूद गजनी के टाइम पे पर्शिया में क्या हुआ था, रेनेसांस हुआ था, ठीक है। तो उनके जो कोर्ट पोएट थे फिरदौसी, वो पर्शियन रेनेसांस राइटर थे, ठीक है। तो आफ्टर दैट द ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द 1000 to the 1027 CE he attacked India 17 times. So this question is the come in exams. There's a how many times Mahmud Ghazni attacked on India? That is the 17 times, and this is a very common questions. Okay, he started invention. Okay, when the Rajput power had declined. So between the 1000 to the 1027, note down that year. Okay, he attacked India 17 times. The main reason behind the conquest of the India of Mahmud Ghazni, what is the main reasons? So there is a debate among the historians. According to some, that is the his main aims was firstly accumulated the wealth. Okay, so accumulated the wealth, and by this wealth what he want to transform the Ghazni, his capital city, into a powerful center. Okay, सो वो क्या चाहता था, जो वेल्थ जो है इंडिया के वेल्थ के बारे में उसने बहुत सुना था, ठीक है, अपने फोर फादर्स से या जो ट्रेडर्स थे, अरब ट्रेडर्स थे, उनसे बहुत सुना था जी इंडिया में बहुत वेल्थ है, और उसको वेल्थ का बहुत जरूरी था। उसके लिए वेल्थ क्यों जरूरी था? फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो सिटी था, उसका तो कैपिटल सिटी था गजनी को, वो एक पावरफुल सिटी में ट्रांसफॉर्म करना चाहता था, ठीक है। तो किसी भी सिटी को अगर हम लोग पावरफुल सेंटर में चेंज करेंगे तो पहले सबसे पहले उसके प्रोटेक्शन के बारे में सिटी को ऐसे एक सिटी में ट्रांसफॉर्म करना होगा जैसे उस सिटी के ऊपर और उस जगह के ऊपर कोई इजीली अटैक नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो इस टाइप से उसने, तो उसका यही सपना था कि जितना भी पैसा मुझे मिलेगा, जितना भी वेल्थ मुझे मिलेगा, मैं अपने जो सिटी है, मेरा जो कैपिटल सिटी है, उसको वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सेंटर बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो ही कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल्स एंटर द सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो उसको सेंट्रल एशिया भी जाना था, और सेंट्रल एशिया अगर वो जाएगा तो उसको तो पैसे की जरूरत ही होगा, पैसा का तो जरूरत उसको ऑब्वियसली होगा, है ना, वेल्थ का तो जरूरत होगा, क्योंकि जब सेंट्रल एशिया जाएगा तो उसको तो एक ह्यूज आर्मी मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। और जब ह्यूज आर्मी कोई मेंटेन करेगा तो आर्मी मेंबर्स जो होंगे, आर्मी के जो सोल्जर्स होंगे, उनको तनख्वाह देना पड़ेगा, उनका खान पान देखना पड़ेगा, है ना, सब कुछ, फूडिंग लॉजिंग सब उसको देखना पड़ेगा, सैलरी भी देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तो ये बहुत पैसा कहाँ से आएगा? तो मामूद ने सोच लिया ये पैसा मुझे इंडिया से ही लेना है। तो सेकेंड, और अकॉर्डिंग टू अदर हिस्टोरियंस, जे उसको इस्लाम है जो है, इस्लाम को भी स्प्रेड करना था, ठीक है। तो वो आया इंडिया में, कन्वर्शन भी बहुत किए उसने। he converted the Hindu people in the Muslims, Muslim converted the Hindus in the in Muslim. Okay, so he destroyed the so many Hindu temples. Okay, and after destroying the images, okay, the images of the temple, destroyers of images, कहाँ के images of temple, ठीक है, टेम्पल को जो इमेजेस को जो डिस्ट्रॉय किया उससे, क्योंकि हम लोगों को पता है जो इस्लाम का जो है ये क्या है, वो एक ही भगवान को विश्वास करते हैं, और ये जो वर्शिप ऑफ इमेजेस है ना, जो मूर्ति पूजा है ना, उन पे वो
विश्वास नहीं करते थे, तो उन्होंने उसने क्या किया, जितने भी हिंदू टेम्पल को उसने लूटा, सबके जो इमेजेस थे, जो गॉड गॉडेस की जो मूर्तियां थी, उनको तोड़ डाला। और आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द इमेजेस ही टूक द टाइटल शिकॉन। ओके, सो note down this one. So what is the, after destroying the images, which title he took? Okay, so in 1100 CE, he first invaded the modern Afghanistan. Okay, at first he introduced he invaded the modern Pakistan, Afghanistan, and both in the Pakistan, and defeated again. He defeated, after his father. He also defeated the Shahi ruler of Jaipala. Okay, in the first battle of the Wahind. Okay, so mark down this one, the first battle of Wahind, between whom the first battle of Wahin is fought. तो ये क्वेश्चन इज was fought, ये क्वेश्चन भी आ सकता है. तो then your answer is the between the Hindu Shahi ruler Jaipala and the Mahmud of Ghazni. ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला सिलेबस अब बहुत अपडेटेड हो चुके हैं और क्वेश्चन भी बहुत टफ आना बा एडवांस मोड में आना स्टार्ट हो गया है. सो आफ्टर डिफिटी, सो जयपाल जब हार गया, ठीक है ना, सो जयपाल जब हार गया तो उसने क्या किया, जयपाल बाउंड हिमसेल्फ. ओके, बिकॉज ही अनएबल टू बियर हिज डिस्ग्रेस. वो जो उसका जो वो हुआ था, बेइज्जती जो हुआ था उसका, है ना, वो हार गया, उसको उसको आत्मसम्मान में बहुत ठेस पहुंचा. हाँ, और उसने क्या किया, आत्मदाह कर लिया. एंड आफ्टर दैट बिटवीन द 1004, नोट डाउन 1006, द एमजी स्टैंड्स फॉर द Mahmud of Ghazni. Okay, attacked the ruler of Multan. Okay, and after that in 1008 CE, the second battle of Wahind took place between the Mahmud of Ghazni, Mahmud and the Anandapal. So who is the Anandapal? Anandapal is son of Jaipal. Okay, the son of Jaipal. So son of Jaipal. So between whom, if you have the questions, that is the between whom the second battle of the Wahin took place, then your answer is the Mahmud of Ghazni and the Anandapal. Okay, and where they fought near the Peshawar. Also mark down this one or write down. So between the 1014 and the 1018, he attacked on Thanishas, and we all know the name, or we are all know very well the place of Thanesar, the place Thanesar, because the Thanesar is the capital, or the Thanesar where the Harshavardhana, the king Harshavardhan, has his empire. Okay, and after attacking Thaneshara, he burned the Mathura. Okay, and attacked Konaj, and Konaj has the very much important. The Konaj is the very much important for the Indian history. Why? Because the Konoj, the area of the Konoj is the very much fertile. Okay. For that reasons, in the early medieval age, the so many kings or the so many regional powers fought against each other to control the power of Kanauj. And what is the struggle name? The struggle is known as the tripartite struggle. Tripartite tripartite struggle. Tripartite struggle. ओके, क्योंकि कोनोज का जो लैंड था बहुत फर्टाइल था. ठीक है, कोनोज का जो इकोनॉमी था बहुत ही, मतलब बहुत एडवांस था. ठीक है, बहुत ग्रोथ, कोनोज बहुत ही रिच एक एरिया था. तो उसको उसको अपने कंट्रोल में रखेगा, इसके लिए क्या हुआ था, एक स्ट्रगल हुआ था, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपार्टिट स्ट्रगल. ओके, सो इसके जो किंग थे, कौन किंग थे, किंग चंदेला किंग. कौन थे वो, उनका नाम था विद्याधर. ठीक है, तो विद्याधर जो किंग थे उसको भी उसने हराया. आफ्टर दैट
1025 he had plundered the famous temple of गुजरात. तो हम लोगों ने जब भी पढ़ा है जिस महमूद अब गजनी से कि कौन से टेम्पल को लूटा है, तो हमारा सबका आंसर एक ही होता है, सोमनाथ टेम्पल, है ना. तो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच कॉमन for everyone. Everyone knows that the Mahmud Ghazni attacked on the Semnath temple, and this temple dedicated to whom? Dedicated to the Lord Shiva. Okay, Lord Shiva. So the Chalukya king, named the Chalukya king, during that period, the Chalukya king Bhima I had complicated the preparation against him. Okay, it was so he completed his all preparations against him. Okay, but after that it was the Bhima one who is fast completed the repairing of the सोमनाथ टेम्पल. तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जे सोमनाथ टेम्पल को किसने पहले रिपेयर किया था. हाँ, और महमूद गजनी के खिलाफ कौन से चालुक्य रूलर पहले चालुक्य रूलर ने युद्ध किया था, उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ था. तो तुम्हारा सब कोई का आंसर भीमा वन ही होगा. ठीक है. और उसके बाद भीमा वन ने क्या किया था, जब महमूद ने पूरी तरह से सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसका जितना भी मंदिर में जितना भी वेल्थ था, है ना, जितना भी वेल्थ था मंदिर में, सबको क्या किया था, लूट करके सबको अपने देश चला गया. ठीक है. So Bhima was the one is the one of the most important king of the Chalukya dynasty. Okay. So after that, we come to the next point, that is the point discussing with the several scholars who are in the court, who belong to the court of the Mahmud Ghazni. So amongst them are the famous are the Al-Biruni. Okay, we know the name of the everyone we know the name of Al-Biruni. So this Al-Biruni, and then is the Firdausi. Okay, and then is the Utbi. So who is the Al-Biruni? Al-Biruni are the fast Indologist. Al-Biruni is the fast Indologist. Okay, fast Indologist. Who is the Indologist? Or whom we call the Indologist? Who deals with Indian culture, religious, or etc. Okay, and they are the scholars. They are, sorry, not this they. This is a they. They specialized. 1 minute. And they have the extreme knowledge on the Indian culture, religious, okay, every sphere. And what is the name of the Al-Biruni? That is the Kitabul Rehala. What this is the, we have some printing mistake, that is a Rehala. And also we call the Kitabul Hind. Okay, and another book is written by him. It is a Kitab as-Saydana. Okay, so Kitab as-Saydana is dealt with the medicines. Okay, so Al-Biruni is it's the astrologers. Okay, astrologer of Mahmud Ghazni. Okay, he is the prominent scholar of the medieval India. Okay, he came to the India and observing the Indian life, Indian religious, Indian culture, Indian education, Indian educations. Okay,
and wrote his books, the Kitabul Rehla. So when we read the history of the Mahmud Ghazni, it is very much important. So from where we know the detailed information. So the Al-Biruni's book, the Kitabul Rehla, is for that reason is the very much importance for this period. Okay, this is the one of the most important literary sources of that period of this period. Sorry, after that we read about the we discussing about the Firdausi. So who is the poet Firdausi? Firdausi is the court poet. Okay, Firdausi is the court poet of Mahmud Ghazni. Okay, and he known as what he known by the name by this phrase he known by the phrase that is the Homer of the East. Okay, what is the name of his book? That is the Shahnama. Okay, this book name is Shahnama. And after that he write the book of the another scholar we read discussing about the Udbi. He is the court historian of the Mahmud Ghazni. Okay, court historian of the Mahmud Ghazni, and he is the writer of the Kitabul Yamini. He was the writer of Kitabul Yamini. Yamini, what is the Yamini? As we know, Yamini, the dynasty of Mahmud Ghazni. Mahmud Ghazni. ओके, महमूद गजनी का जो डायनेस्टी था उसका नाम यामिनी था. तो उदबी जो थे तो वो मोहम्मद गजनी के कोर्ट पोएट थे, तो उन्होंने ये बुक लिखा किताबुल यामिनी. आफ्टर दैट सो महमूद गजनी डाइड इन द 1030 सी. ओके, तो अब 27 में ही उनका जो लास्ट इन्वेंशन था 1027 को ही हुआ था. उसके बाद और महमूद गजनी इंडिया नहीं आए. 1030 को उनका डेथ हुआ था. और among the all Muslim rulers, okay, the Mahmud Ghazni one of the first who introduced the coin in Indian style. He followed the Indian style, okay, and he introduced the coin in the Indian style, in also known as what this Delhi wala. His coin is known as the Delhi wala. Ignoring the number 6, okay, is the Delhi wala, and the weight of this coin is 56 grain. So from here you have also have questions like that, the what is the name of the coins of Mahmud Ghazni? This is the Delhi wala, and the weight of coin, that is the 56 grain. Okay, and he also established mosques. What is the name of the mosque? That is the Celestial Bride, and this is also described as the wonder of the East. Okay, so after the decline of the Yamini dynasty, or after the date of the Mahmud Ghazni, the Ghor dynasty come to the power. Okay, and in our next session we discussed about the Ghor dynasty. Okay, in the Ghor dynasty we will discuss about the Mahmud Ghor and his slaves. Okay, how he established this dynasty in the India and divided his territory among his slaves. Okay, so this is for today. Thank you everyone.